Good morning, students. Now, as per alternative academic calendar, you student know that your class teacher also said, and I have also said in group that alternative academic calendar. Accordingly, we have to follow the our curriculum. We have to teach like that, and we have to learn like that. So now see here, what is alternative academic calendar? In this alternative academic calendar, now for 8th class, this is for 8th class students. So इसमें now the week which is running, that is after our chapter 8th chapter, now 7th chapter, this one week 9, you can see here week 9. So in this the chapter given is force and pressure. इसमें कौन सा चैप्टर दिया है? फोर्स एंड प्रेशर. सो बीच में जो चैप्टर है 8, 9, 10 उसको छोड़ दिया है और डायरेक्टली 11th को चले गया है, क्योंकि स्पाइरल टीचिंग के हिसाब से दिया है. वो फिर से हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अकाडमिक कैलेंडर आएगा. इसको क्या बोलते हैं हमने? अल्टरनेटिव अकाडमिक कैलेंडर. ACDC लाइव क्लास, हम नेक्स्ट लाइव क्लास लेंगे जब ACDC ज्वाइन हो जाएगा. आपको पूछेगा आप किस तरह से सीख रहे, तो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अल्टरनेटिव अकाडमिक कैलेंडर में. इसमें क्या क्या करना है देखिए. फर्स्ट, फोर्स क्या है उसका डेफिनेशन बताना है. टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताना है. प्रेशर बताना है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. और आपको यहाँ दिया है रीड चैप्टर 11 ऑफ द NCERT साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8. If physical book is not available, then go to download from e-पाठशाला. आपको e-पाठशाला में डाउनलोड करना है और देना है, क्योंकि recently your class teacher I think told to you that you have to download the e-पाठशाला app. All student, I am also telling you that you have to download the e-पाठशाला app, and we are following according to alternative academic calendar. I am writing here AAC. What is AAC means? Alternative academic calendar. Now week 9 we are going through now learning week 9 alternative academic calendar. week 9 के हिसाब से now we are going to learn the chapter that is force and pressure. Force and pressure. Now see students, in your textbook you can download from e-पाठशाला your textbook. It is very easy and it very looking very colorful. So you go to the e-पाठशाला. If you have any doubt you can call me. And now see here, what is force and what is pressure. Before going to know what is force and pressure, now here this is a pen. Now this is in rest position. Rest position means not moving anywhere. Suppose what I am doing here now, pushing or pulling. Now I am pushing from back side. I am pushing. Now what I am doing, pulling. ओके, बैकवर्ड लेके आ रहे हैं ना, तो पुलिंग है. तो हम ये कब, when this object is now in rest position, to bring it in motion, object which is in rest position, to bring this rest object in motion, what we have to do? We have to apply force. We have to apply force. Now I am pushing means applying force. Then it is changing from rest position to motion. Rest to motion. Rest to motion. When this takes place, applying force. Okay, now see here, this is a marker. Now I am pushing, then also it is moving. First it is in rest, now it is in rest. When I am pushing it is moving forward. When I am pulling it is moving backward. That means if you push it will move, if you pull it will move, if you push it will move, if you pull it will move. But any case, whether you push or pull, the object which is in rest that can move. So we can define, students, what is force mean as per your textbook definition.
it is not the perfect definition, because the force definition you will learn in class 10th is different. But at 8th standard, in 8th class, what is the definition of force is that push or pull of an object is called force. So this definition given in your textbook, you remember this one. So what is force means? Push or pull an object is called as force. Suppose this is the object, this marker is the object. Now I am pushing, now I am pulling. So this two phenomenon is called as force. When we push or pull an object is called as force. Now suppose see here, not only push and pull. Now what I am doing here, I am lifting this, उठा रहा हूँ मैं. So lifting of an object is also called as force. It is not given in your textbook, but we can say lifting an object is also force. Now see here, table 11.1 given in your textbook, table 11.1. So you have to complete it and submit it today. This is activity number 1 as per alternative academic calendar. Activity number 1. ओके, सो टेबल 11.1 उसमें क्या दिया है आपको, एक एग्जांपल दिया है. उसमें ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे कि पुल कर रहे कि लिफ्ट कर रहे. ये है एक्टिविटी 1, दैट इज कॉल्ड एज टेबल 11.11. हियर इन अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर इधर दिया गया है, देखिए एक्टिविटी 11.1 टेबल 11.1. हम इसी को फॉलो करना है, याद रखना है. अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर सबको पता होना पड़ेगा, सबको. ओके, सो दिस इज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर. सो यू डू दैट. सो वी हैव डिफाइंड व्हाट इज फोर्स and definition, push or pull an object is force. Now what happens when we apply? Okay, 1 minute. Now what happens when we apply force on object? Suppose you take here, when we take one ball, see students, when we take one ball, what happens? I am rubbing this. I define what is force. Now suppose ये एक बॉल है, हमने इसको इस साइड से पुश करेंगे तो बॉल पूरा इस डायरेक्शन में जाएगा. अगर ये बॉल है, हम इस साइड से पुश करेंगे तो बॉल इस साइड में जाएगा. ओके, अगर ये बॉल है, इस साइड से भी पुश करेंगे और इस साइड से भी पुश करेंगे, इक्वल फोर्स है. इस साइड से जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, इस साइड भी जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तब ये मूवमेंट ज़ीरो होगा. अंडरस्टैंड, देयर इज नो मूवमेंट. ओके, आप देखा है जब कोई क्रिकेटर बॉलर बॉल फेंकता है तब बैट्समैन बॉल लगाता है तो वो दूसरे डायरेक्शन में, मगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है, जब इक्वल फोर्स अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शन में तो रुक जाता है. सपोज आप देखिए, ये पेन को मैंने इस साइड से पुश कर रहा हूँ और सामने से इधर से अपोज कर रहा हूँ. ये दोनों फोर्स इक्वल रहने से ये ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा. देखिए, इस साइड से आई एम मूविंग फ्रॉम दिस साइड and also opposing from this side, opposite side. So when these two force become equals, the object not moving this side or this side. अगर ये राइट हैंड का फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जाएगा इस साइड. अगर ये ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जाएगा इस साइड. ओके, सपोज इफ दिस फोर्स इज 10 न्यूटन्स and this force is 5 newtons, the object goes in this direction because this is very high. Understand? Suppose this is also become 5 newtons and this is also become 5 newton, so the object neither it go this side nor it goes this side. Understand? So this happens due to the force, and these force can be various types. Okay, so I am telling these two types of force. That first one is
contact force, and second one is uncontact force. ये यहाँ तक देख लीजिए और टेक्स्ट बुक पढ़िए. एक्टिविटी आज जो दे रहा हूँ मैं 11.1 कंप्लीट अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर. ठीक है. सो दिस इज टुडेज क्लास.